ఢిల్లీలో ప్రతిపక్షాల భేటీ అనంతరం మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Good afternoon to everybody. We are all representing now our party president, respected Sri Arvind Kejriwal, Congress party Abhishek Manoj Singhvi, respected Kapil Sibalji, CPI S. Sudhakar Reddy Garu, SP Surendra Singh, JDS Justice Sri Bosle Patil Garu, all 23 other political parties are supporting this press conference, and also they are in election process. They are unable to come here, but they told us they will support this issue, especially demanding 50% VVPAT counting. That is our demand. First, Singhviji will explain, then we will talk. दोस्तों, आने के लिए धन्यवाद. मंच में जो बैठे हैं, हम लोग 21 पार्टीज का पक्ष रख रहे हैं. आज 15 प्रादेशिक पार्टियां, 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से 6 राष्ट्रीय पार्टियां, यानी भारत के 70-75% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग. और इनका उद्देश्य, इनके मन में उद्देश्य एक ही है, जनहित. मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है. किस प्रकार से समतल जमीन रखना, निष्पक्ष स्वतंत्र वोट पड़ना, जो बुनियाद है गणतंत्र लोकतंत्र की, और वो संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, बेसिक स्ट्रक्चर का. अगर उसमें किसी रूप से सीधे या परोक्ष रूप से आघात होता है तो वो हमारे मूल ढांचे पर आघात होता है. हम ने निर्णय किया है, जो आपके समक्ष रख रहे हैं, कि हम पुनः उच्चतम न्यायालय जाएंगे. विभिन्न याचिकाओं और अर्जियों द्वारा हम पूरे देश में अभियान करेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, और ये पक्ष रखेंगे कि बार बार बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह और संदेह उठे हैं चुनाव की प्रक्रिया पर. अभी हाल में जो पहला पक्ष, फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सिर्फ उसके जरिए इतने सारे प्रश्न उठे हैं, और हम नहीं मानते कि चुनाव आयोग उस पर उपयुक्त ध्यान दे रहा है, उस पर उपयुक्त सुधार की प्रक्रिया कर रहा है. चुनाव आयोग से आगे जाएं तो वो संस्थाएं इस देश की जो गणतंत्र का संरक्षक करती हैं, वो भी शायद इन मुद्दों पे पूरा पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं. इस फर्स्ट फेज में हमने अजीबोगरीब कहानियां सुनी. बटन एक्स पार्टी का दबाव, वोट वाई पार्टी को जाता है. वीवीपीएटी की बात करते हैं, 7 सेकंड तक दिखेगा, दिखता सिर्फ 3 सेकंड तक है, 4 सेकंड तक है. लाखों वोटर ऑनलाइन डिलीट हो जाते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया से, बिना शारीरिक वेरिफिकेशन के, इत्यादि इत्यादि. इसकी लंबी लंबी सूचियां सब पार्टियों ने दी हैं चुनाव आयोग को. लेकिन मूल बात जो इससे उभरती है वो ये है कि चुनाव की विश्वसनीयता के लिए और भी अति आवश्यक हो गया है कि एक सरल आपके सामने समाधान है, और वो है वीवीपीएटी की जो पेपर ट्रेल है वो न्यूनतम 50% हद तक गिने. इससे सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र मिलता है, और यही मांग हम पुनः उच्चतम न्यायालय में करेंगे. इसके बारे में आपको ये बता दूं कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने यानी एक मशीन, एक सेगमेंट या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर 5 मशीन्स का आदेश दिया है, हम मानते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है. रोचक बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारी
दलील को माना है, लेकिन मानने के बाद उसको कार्यान्वित करने में पर्याप्त मात्रा नहीं दी है। और मैं आपको उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़ दूं, जिससे कि सैद्धांतिक रूप से हमारी मांग को माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है, इट इज पॉसिबल एंड वी आर सर्टन दैट द सिस्टम इंश्योर्स एक्यूरेट इलेक्टोरल रिजल्ट्स, बट दैट इज नॉट ऑल। If the number of machines which are subjected to verification of paper trail can be increased to a reasonable number, it would lead to greater satisfaction amongst not only the political parties but the entire electorate. This is what the court should endeavor, and the exercise therefore should be to find, very important, a viable number of machines that should be subjected to the verification of VVPAT paper trails. सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब है कि हमने जो सिद्धांत रखा वो स्वीकार किया उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन जो बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है, वो अभी भी ऊंट के मुंह में जीरे से भी बराबर नहीं है। अगर आपको प्रभाव करना है, जो दुरुपयोग है उसको सही करना है, विश्वसनीयता करनी है, तो ये अति आवश्यक है कि आप 50% कहें। हम इस बात पे नहीं मानते कि 50% पत्थर पे लगी लकीर है, लेकिन इतनी वृद्धि होनी चाहिए उस संख्या के आसपास जिससे विश्वसनीयता पूरी हो। एक बात और है, जिस प्रकार की दलीलें ये नहीं करने के लिए सामने रखी हैं चुनाव आयोग ने, अन्य पक्षों ने, वो बिल्कुल सही नहीं हो सकती। कुछ प्रकार से वो हास्यास्पद हैं। पहली बात तो कहा गया कि 5.5 दिन लगेंगे अगर 50% गणना होगी। ये सब लीडर बैठे हैं यहाँ पर, ये जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब हम सब चीज़ हाथ से काउंट करते थे फिजिकल, तब भी 5.5 दिन नहीं लगते थे। लेकिन अगर मान भी लें कि 5.5 दिन लगेंगे एक ही टीम काउंट करने से, तो हमने रखा सामने उच्चतम न्यायालय में ये पक्ष कि अगर वो टीम दुगनी तिगनी हो जाए तो 2.5 दिन क्या 1.5 दिन में हो जाएगा सब काम। एक तरफ जहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वसनीयता का सवाल है, और एक तरफ लॉजिस्टिक्स, सहूलियत का सवाल है, तो मैं समझता हूं उसमें वोट किस तरफ जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक बात और ध्यान रहे, 2013 में कई निर्णयों द्वारा 4 निर्णय उच्चतम न्यायालय के आए, जिसमें कहा गया कि अति आवश्यक है, इंडिस्पेंसिबल है वीवीपीएटी मशीन होना ईवीएम के साथ। और इन्हीं आदेशों के अंतर्गत हम लोगों ने अभियान किया, याचिकाएं की कि वीवीपीएटी जो लगभग 20-30% था वो 100% हुआ 4 वर्ष में, 5 वर्ष में। सरकार ने पैसा, पहले देते नहीं थे, अब सरकार ने पैसा भी दिया। अगर आप बाएं हाथ से 100% मशीन देते हैं और दाएं हाथ से कुल 2% ऑटोमेटिक सैंपल चेक करते हैं, तो एक प्रकार से आप दाएं हाथ से वो ले रहे हैं, छीन रहे हैं, जो बाएं हाथ से दे रहे हैं। इसलिए ये अति आवश्यक है। और ये जो मैंने कहा इंडिस्पेंसिबल है वीवीपीएटी, ये खुद उच्चतम न्यायालय का निर्णय है 2013 का, जिसमें आज के मुख्य न्यायाधीश भी पार्टी थे। उन्होंने ये कहा था, पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिस्पेंसिबल। तो दोस्तों, अपनी हम बात खत्म करेंगे। माननीय नायडू जी आपको ईवीएम के और व्यापक पक्ष बताएंगे। ये दोहरा कर कि हम विनम्रता से निवेदन करने वाले हैं, राजनीतिक रूप से पूरे देश में अभियान चला के, कानूनी रूप से उच्चतम न्यायालय में 21 पार्टियां इस देश की 70% जनसंख्या को रिप्रेजेंट जो करती हैं, कि न्यूनतम यहां पर 50% के लगभग ऑटोमेटिक सैंपल चेक होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारी गणतंत्र पे एक बहुत गंभीर और गहरा प्रश्न चिन्ह उठता है। Friends, today is happened to be 128th birthday of Ambedkar ji. I am quoting his quotation. I am not giving any sharp knife to the citizens of my country. I am giving a weapon sharper and stronger than a knife to each and every citizen of the country, through universal adult franchise in the form of right to vote. It is for the citizens to become stronger than knife using this weapon, or to become a slave selling this weapon
to the highest bidder. That is what we quote. He referred at the time. Exactly, it is valid. We are not asking today. We are raising doubts about EVM, VVPAT, and also on EVM for the last so many days, so many years. Originally, there is no VVPAT. All of us struggled. Finally, they accepted. Just now, Singhviji has rightly mentioned, this is the reference of earlier judgment. From the materials placed by both the sides, we are satisfied that the paper trial is an indispensable requirement of free and fair elections. The confidence of the voter in the EVMs can be achieved only with the introduction of the paper trial. EVMs with VVPAT system ensure the accuracy of voting system with an intent to have a fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters. It is necessary to set up EVMs with VVPAT system because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in democratic system. This is the earlier judgment of present CJ and also Sadasivan at that time, CJ of Supreme Court. Today, exactly same thing we are requesting Election Commission. If you see here, my presentation here, so that you will have an idea, broader concept, he has given VVPAT 50% counting. I am giving free face. Why you are demanding from the beginning? This is not a new thing. Some people are saying we are not in a position to face the election. Andhra Pradesh elections is over. I am working for the country. I am working for transparency, save democracy, save constitution, and ultimately this is where for the last so many days we are all together fighting. Irrespective of our political party's affiliation, there is a democratic compulsion. The democratic compulsion is even Election Commission of India and also voting. If you see here, so many countries, 191 countries, only 18 countries, that too underdeveloped and small countries, they have gone for EVMs. Even advancedly very strong countries, Germany, they have gone for EVM, they have withdrawn, used between 2005 and 9, and again they have gone for paper ballot. Netherlands, 2007, they have again they have changed for paper ballot. Ireland, 2002 and 4, they have gone back paper ballot. They made it very clear why they have gone paper ballot. I am giving all the details to you. If you see, EVMs can be manipulated, hacked EVMs, vote stuffing after poll closure, remotely altered control unit display, memory manipulation, replaced microcontroller or memory chips, altered software code. This is where so many ways. If you can see your cell phones, every 6 months you are changing because technology is changing. Here on EVMs, for the last so many years, same EVMs. We are investing 9,000 crores for VVPAT. Now they are saying only one VVPAT will be counted. Now they have increased 5. Why we invested so much of money and we are not counting? The reasons what they are explaining, it is not all reasonable, it is not correct. If you see here, EVMs, failure 18% of the country population, no provision for any adult audit of EVMs, no regulator, parliaments are not aware, and ultimately vulnerable to programming error, equipment malfunctioning, and malicious tampering. If you see how technology will manipulate,
in Telangana by using IP. They have removed nearly 25 lakh voters. Only one functionary, they have used Form 7C, they have removed 25 lakh votes. Ultimately, our people has gone to court in Telangana, but nothing has happened. After elections, they said sorry. 25 lakh voters they have removed with one person by using computer, and then finally Election Commission admitted and they said sorry. Is it the price to pay? Again, one more thing, if you see here, in Telangana, total number of votes polled and total number of votes counted, there is a variation. Counted is more than polled. How can you justify? Earlier there is a paper ballot. In paper ballot you can count physically. Today there is nothing to count. There is another anomaly. Sample check is hardly less than 2%. This is where we are asking at least 50% VVPAT counting. If you see here in Andhra Pradesh recent example, everywhere there are problems. EVMs in the initial stage 20 to 30% not functioning. They took nearly 2 to 6 hours. Ultimately, final EVM started functioning 1 p.m. They closed before 6 p.m. How it is justifiable? Even if you see here, Chief Election Officer had to come again to cast his vote at 2 p.m. Even CEO, not ordinary citizen, your own functionary, head of the state, has come at 2 p.m. to vote again. Voting lasted till 4:30 a.m. Is it democracy? 4:30 a.m. last vote they have casted. And also if you see here, voters harassed waiting in long queues to many polling stations, voting so many times, 3-4 times. They came and they have gone. They stood in queue for more than 10 to 12 hours with children, with odd sunstroke, everything. Women revolted against the Election Commission and staff. They cursed them. That is the feeling as on today on Election Commission. Numerous instances between VVPAT slip shown only 3 seconds as against 7 seconds. These people are saying 7 seconds. Yesterday we raised all these things before the Election Commission. There is no answer from him. Your code is 7 seconds. How we have changed? That means what is the security of the EVM? What is the security of VVPAT? In December 2018, all EVMs were recalled by Bell for maintenance without taking into political parties into confidence. How can you do that? It is not Election Commission issue. It is pertaining to the voters of this great nation. We are all party to that. How can you do that? Without informing why you have done that, what you have done. This is where we are doubting. This is very, very important. Contractual engineers hired by BEL to handle EVMs, no background available of these engineers. They are engaging everywhere, these contract employees, whom we don't know. Ultimately, how you are recruited, nobody knows. Even EVMs management, local employees are part-time. They are also engaged by Election Commission. It is also confusing like anything. They don't know any technology background. If you can go through here, after 2 hours, 9:15 a.m., 7:26 yet to start. Going on like that, the people, up to 4:30 a.m., 3 booths they voted up to 4:30 a.m. next day. Generally 11th is polling day. They have polled on 12th. Who is responsible for this? Can Election Commission take this responsibility?
And also Election Commission, misleading affidavit. They are saying 6 days to count one assembly segment. Is it fair? We were in paper ballot. It used to take 12 hours to 18 hours or maximum 24 hours. I contested in the first election, 1978, only paper ballot. It has come afterwards. Now, how can you justify, even with all these things, maximum 24 hours? It is very simple also. It is a simple slip on the top, name of the candidate, and also symbol. You want to segregate, it is not much time. And at the same time, you can count also, it is very easy. Just like currency denomination, you can segregate, you can count it within no time. Why you are lying to the Supreme Court? Why you filed this affidavit? Earlier, Government of India filed affidavit, wrong affidavit on Rafale. Ultimately, they filed one more affidavit saying that correct this grammar. Government of India don't have credibility. Today, Election Commission has lost its credibility and confidence and trust of the voters. Our demand is very clear. 23 political parties, not 1 or 2 political parties. We are all one. Ultimately, in the beginning, we said we want to go for paper ballot. But due to lack of time, we have changed our stand. We are asking VVPAT counting at least 50%. After 50% counting, there are discrepancies. How to act? Immediately you have to count total VVPAT polling stations, booths. Then only you have to announce results. Or again, if you refer all these things to Election Commission, it is fait accompli. We are very clear on that. Democracy, Election Commission has to protect. Now Government of India is instrumental in managing all constitutional entities. CBI, we have seen. ED, we have seen. Income tax, left and rights, they are doing even today. All opposition states, they are having IT raids. Not even one state where BJP is enrolling. One function of BJP is ruling. What is the level playing field? Is it equal level playing field for all political parties? They have to answer now. Even Election Commission has to answer. They transferred all my officers, even Intelligence DG. Why you are not transferring IB? Intelligence Bureau. He is also conducting surveys. He is also doing political work. Why this type of discrimination? That means towards opposition parties you are behaving differently. Ruling party you are doing differently. Even my chief secretary they have transferred. Whom they have appointed? Questionable. Even co-accused of the YSR Congress party, they appointed as chief secretary. Is it right? Without consulting state governments, you are doing all these things. It is unwarranted. It is not correct approach. Save democracy. Independently, Election Commission has to act. They have spent 9,000 crores on VVPATs. By spending 9,000 crores, you are counting one ballot box. How can you, why you have invested so much of money? Where is the need for that? This is where people of this great country has to think. Intellectuals has to think. What we are asking, we are not asking any unreasonable demand. It is very reasonable demand. There are 14 to 16 tables in every counting station. At one time, within 2 hours time, they can complete, or maximum 3 hours time, they can complete this counting. It is very easy compared to earlier paper ballot. Now, why you are saying lie to the Supreme Court? Yesterday, I asked Election Commission, why you are saying like this? You are new for this commission. We are continuing in politics for the last 40 years. I know paper ballot, I know EVM, then I fought for VVPAT, not today. People are accusing me that I have completed my elections because I may lose the election, that's why I came in. I am giving
guarantee, not only guarantee, 200%, 1000% we will win. 4:30 a.m. people came. Why they came 4:30 a.m.? That is a determination. Not only determination, they are very angry on Election Commission of India and Government of India for misusing this type of things. So they came for voting with vengeance. This everybody has to understand. Ultimately, what we got it from Supreme Court, 1 to 5 booths to count. We are not satisfied. We are asking only simple solution. That simple solution, 50% of booths has to be counted. What Election Commission has filed affidavit, it is wrong, entirely wrong. It is misleading. So we want to go again with discussing with others and also our senior advocates in Supreme Court, either fresh petition or review petition. Ultimately, we wanted to place before this great nation. I am requesting all intellectuals. Recently, 65 officers, IAS, IPS, and also IFS, ex-service, they went to President of India. They questioned the impartiality of this commission. They demanded for action. Now everybody has to do this. Unless 50% of EVPAT has to be counted, and on the basis of that, results has to be announced. Or you don't have any right, again, ask us to go to regular writ or court disputes. That will take another 5 years' time. To save democracy, today is 128th birthday of Ambedkar ji. So all political parties, we are together. We will educate people. We will take to the knowledge of the people, and then ultimately, why BJP and its allies are opposing this decision? They have to answer now. If they oppose, why Election Commission is not acting impartially? Ultimately, we are left with court. Again, we will appeal to the court. We will ask Supreme Court to do justice, to save democracy. This is in brief. Other friends will explain. नहीं, थैंक यू, आई गॉट दिस विल वर्क। सबसे पहले तो मैं चंद्रबाबू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक मंच पे लगभग 70% इस देश के मतदाता रिप्रेजेंटेड हैं। पहली बात, और इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हमें मतदाता पे विश्वास है, मशीन पे विश्वास नहीं है। क्योंकि जो मतदाता की वोट करने जाता है, किसको वोट कर रहा है वो तो उसको मालूम है, लेकिन जब वोट काउंट होता है तो उसको मालूम नहीं कहां काउंट हो रहा है। दोनों पहलू ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। पहली बात ये, मतदाता पे विश्वास, मशीन पे विश्वास नहीं। दूसरी बात, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जो मतदाता जिसको वोट करने जाता है उसी को वोट मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र का मतलब है। इस पे रोक क्यों डाल रहे हैं? इलेक्शन कमीशन इस पे रोक क्यों डाल रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहती कि वीवीपैट काउंट होना चाहिए 50% तक? उसका कोई मतलब होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आज के दिन क्या हो रहा है? 20-25% मशीनें काम ही नहीं करती। लोग सुबह 4 बजे तक वोटिंग करते हैं, लाइनें खड़ी। आपको मालूम है कि 5 बजे तक वोटिंग खत्म होनी चाहिए, और अगर एक 4 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक वोट करते हैं तो इसका निश्चित रूप से मशीन काम नहीं कर रही। बटन एक जगह दबाओ तो वोट कहीं और जाता है। बिजनौर में हुआ। तो अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसको नजरअंदाज करेगा तो फिर हमें कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे
क्योंकि यह आवाज मतदाता की आवाज है। दूसरी बात, अगर 75 से 75 मतदाता चाहते हैं कि वीवीपैट 50% काउंट होना चाहिए, तो ये तो मेजॉरिटी है ना। तो अगर मेजॉरिटी चाहती है तो चुनाव आयोग काउंट क्यों नहीं करता? रोक क्यों लगा रहे हैं? हम चुनाव आयोग को बता सकते हैं कि कैसे ये मशीन मैनिपुलेट होती है, हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मशीन चाहिए। 12 घंटे 24 घंटे चाहिए और हमें बताएंगे कि कैसे मैनिपुलेट हो सकती है। वो भी सुविधा वो तैयार नहीं है देने को। क्यों? और हमें इस बात का भी दुख है कि इन बातों को बाकी संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए। ये हम देखिए, अभी रिजल्ट तो नहीं हुआ आउट, अभी तो सेकंड फेज है। हम क्यों आज आपके पास आए हैं? क्योंकि अभी सेकंड फेज चलने वाला है, और जो फर्स्ट फेज में हमने देखा है वो आपके सामने नायडू जी ने रखा है। और अगर हमें राहत नहीं मिलेगी और चुनाव और मशीन के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद रास्ता ही क्या है? कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हैं। इलेक्शन पिटीशन फाइल करो, कोर्ट में 5 साल वेट करो, उसके बाद चुनाव आयोग फिर दोबारा कहेगा मशीन का इस्तेमाल करो, वही गलत कारनामों के साथ फिर सरकार बनेगी और किसी को राहत नहीं मिलेगी। मतदाता वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ये हमें मंजूर नहीं है, देश की जनता को मंजूर नहीं है। हम यहां राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, किसी को मंजूर नहीं है। और अगर चुनाव आयोग फिर भी जिद करेगी तो फिर हम फैसला करेंगे इकट्ठा होकर हमें आगे क्या करना है। याचिका तो हम डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम डालेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं देख सकती वहां जाकर के नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। वो तो हम देखते हैं ना, हमें मालूम है कि कैसे काउंटिंग होती है। 14 मशीनें, लोग अधिकारी खड़े हो जाएं, 2 घंटे में काउंटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम। और अगर चुनाव आयोग मतदाता का साथ नहीं देगा, चुनाव आयोग अगर मतदाता का साथ नहीं देगा और मशीन का साथ देगा, तो फिर तो वो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है उस देश का, उस लोकतंत्र का, जहां चुनाव आयोग मशीन का साथ दे और मतदाता का साथ नहीं दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, इस देश के लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, सभाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग एक ही बात बार बार बोलते हैं, जी मशीन देख लेना, ईवीएम देख लेना। ऐसी चुनाव प्रणाली जिसके ऊपर लोगों को ही भरोसा ना हो, तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है पूरे लोकतंत्र के ऊपर। आज एक पार्टी को छोड़ के इस देश की सारी पार्टियां और इस देश के लगभग सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मशीनें गड़बड़ हैं, ईवीएम गड़बड़ है। इस देश के सारे लोग तो ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन चूंकि अभी संभव नहीं है तो कम से कम काउंटिंग तो कर लो। जो पर्चियां निकालते हो, वो पर्चियां निकालते क्यों हो? फिर वो वीवीपैट रख क्यों रखी है? फिर अगर वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग ही नहीं करनी तो जनता ये पूछ रही है फिर ये मशीनों पे खर्चा ही क्यों करा था? वहाँ पे सजा के रखने के लिए थोड़ी करा था। तो उन पर्चियों की काउंटिंग तो होनी चाहिए। तो एक ही पार्टी है जो पूरे देश के अंदर सारे इस देश की सारी जनता, यहाँ तक कि बीजेपी के वोटरों से भी जब हम बात करते हैं, वो भी कहते हैं हाँ जी इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, काउंटिंग तो होनी चाहिए। तो देश की सारी जनता चाहती है, देश की सारी पार्टियां चाहती है, केवल एक पार्टी इसके खिलाफत कर रही है कि ईवीएम की पर्चियों की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। और वो पार्टी क्यों खिलाफत कर रही है? क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचता दिख रहा है। वो भी प्रोग्राम्ड तो नहीं है कि वही प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि खराब ऐसे होएगी
कि वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। तो ये मशीनें खराब नहीं होती हैं, वो मशीनों को प्रोग्राम इस तरह से किया जाता है कि वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। तो उनमें 2-4 पकड़ी जाती हैं, तो जब पकड़ी जाती है तो कहते हैं मशीन खराब थी ये वाली। आज तक किसी भी खराब मशीन की जांच नहीं हुई कि भाई ये क्यों खराब थी, कहां खराब हुई, किसने खराब करी, ऐसा क्यों हो गया कि सारा कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जा रहा है, ऐसा क्यों हो गया। ये तो टेक्नोलॉजी है ना, मैं भी इंजीनियर हूं, थोड़ा बहुत समझता हूं टेक्नोलॉजी को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मशीन खराब बीजेपी के पक्ष में ही हो। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई जांच नहीं करते। अभी जो आंध्र प्रदेश के अंदर हो, ये बहुत ही खतरनाक है, जो चंद्रबाबू नायडू जी ने बताया कि मशीनें इतने घंटे तक खराब कर दी कि इनकी क्या साजिश है। साजिश ये है, जो बूथ भाजपा के खिलाफ है, सबको पता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता है ये बूथ हमारे पक्ष का है, ये बूथ हमारे खिलाफ है, यहां हमें वोट पड़ने वाले हैं, यहां नहीं पड़ने वाले। जो बूथ भाजपा के खिलाफ है वहां मशीन खराब कर दो, 4 घंटे मशीन खराब रहेगी, सब थक थका के लाइनों में लग के घर चले जाएंगे, वोट परसेंटेज कम हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि सारी रात लोगों ने आंध्र प्रदेश के अंदर लाइनों में खड़े होकर सुबह 4 बजे तक वोट डाले हैं। क्या कसूर था उनका? 4 बजे तक क्यों उन लोगों को लाइन में खड़ा किया गया? किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि नहीं की जाएगी? अभी मैं देख रहा था चार्ट जो चंद्रबाबू नायडू जी ने दिखाया है, 3 बूथों के ऊपर सुबह 4:30 बजे तक वोट पड़े, 5 बूथों के ऊपर सुबह 3:20 तक वोट पड़े, 256 बूथों के ऊपर रात को 10 बजे तक वोट पड़े। ये चुनाव हो रहा है कि मजाक हो रहा है? आप लोगों ने टीवी खरीदते हो, आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हो, इतनी बड़ी संख्या के ऊपर कभी टीवी खराब हुए? इतनी बड़ी संख्या में कभी रेफ्रिजरेटर कंपनियां बंद हो जाती हैं? और ये ईवीएम रोज खराब हो रही हैं, मतलब पूरी की पूरी ईवीएम इतनी ईवीएम एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, छोटी सी माइक्रोचिप है उसके अंदर, तो खराब हो नहीं रही है। ईवीएम का खराब होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया इस देश के अंदर। ईवीएम खराब की जा रही हैं, जानबूझ के ईवीएम खराब की जा रही हैं। ईवीएम खराब की जा रही हैं वोटर्स, ऑपोजिशन के वोट को सप्रेस करने के लिए। ईवीएम खराब की जा रही हैं भाजपा को वोट डलवाने के लिए। दोनों तरह से ईवीएम खराब की जा रही हैं, और ईवीएम के ऊपर इस देश के लोगों का भरोसा अब नहीं बचा है। और आखिरी बात, सारी बातें अभिषेक जी ने, कपिल जी ने, चंद्रबाबू जी ने कह दी, लेकिन इस अभी जो निकल के आ रहा है, इतने मास स्केल के ऊपर जो वोटर्स के डिलीशन हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली के अंदर 30 लाख वोटरों के नाम कटवा दिए। ये तो हमें टाइम पे पता चल गया, ऊपर वाले का शुक्र है, 6 महीने पहले पता चल गया, हमने कईयों के जुड़वा दिए। 30 लाख दिल्ली में कटवा दिए, 25 लाख तेलंगाना में कटवा दिए। ऐसे चुनाव जीतेगी बीजेपी? ये तरीके उनके चुनाव जीतने के बीजेपी के? हिम्मत है तो मैदान में आओ ना, कहते हैं हम मर्द हैं, आओ मैदान में, फिर लड़ो चुनाव, ढंग से ईमानदारी से लड़ो चुनाव। अभी 11 तारीख को majority vote in a few constituencies also. According to counting in the booths and according to the announcement of the Election Commission, there was a difference, starting from 200 votes to more than 1100, 1200 votes. That is why this problem is being raised again and again. It is the responsibility of the Election Commission to prove that electronic voting machines are beyond doubt. For that, we demand that now they should go for the counting of the VVPATs. There is no other go except doing it. Then only confidence can be restored. Otherwise, we may have to go back to ballot. These things, when it is being raised, we don't understand why the Election Commission is taking it in a very light way. They are not ready to discuss thoroughly about these things. This is a very important issue, and in the next phases of the election, these things should not take place.
and we welcome the judgment of the Supreme Court, though it is only partial, and we would like it should be revised for counting of the 50% of the VVPATs. Thank you. Only 1 minute we are giving some presentation. That is 7 seconds. They made it very clear in court, but it is only 3 seconds. We won't demonstrate that. Japan. Good morning, guys. While the video is going to pop up over here, it's a small video where I try to present the machines that are used in the state of Andhra Pradesh. Is it audible? Okay. So there is a small video I'm going to show up now. By the time it is loaded, let me explain what it is. It is about the original VVPAT demonstration given by Election Commission of India, which is in the center. And on the left and the right side of it is the machine one used in one of the constituencies in Chittor district of Andhra Pradesh called Pileru. The polling booth is some 273 or 293, I think you can see it over here. And the other one is one in a constituency called Parchuru in Guntur district. What we found in this is Election Commission of India, or many of us know that it is claimed that the code written in this machine cannot be changed. It is done in a OTP, one-time programmable chip, and it cannot be changed. Think about, you have set an alarm for 7 a.m. Can you expect the alarm to ring at 3? It doesn't. Maybe sometimes in mechanical things it may happen, but not in electronics. So when we observed that it is 3 seconds, then we were a bit shocked to see, because it clearly states that the code inside it is different from what the code they have written for the actual machine. Run it for, it's about some 20-25 seconds. Let it go through. Can you play? You can clearly understand from here the original what they demonstrated. Slides the printer down, the printer slip down, and then waits for 7 seconds. But whereas when you see the other two, you can see it is just flashing for 3 seconds and it disappears. The only thing first, if at all the code is changed in the machine, then how can you believe it? How can you trust it? The Election Commission need to answer this question, whether they have changed it or the BL engineers who have sent these machines have done some mistake. If so, let them come, open, tell and correct it. So these kind of apprehensions are there. We found these things across. I showed you only 2 instances here, but we have several instances across Andhra Pradesh where this 3 seconds has showed up. It doesn't mean that all the machines are 3 seconds again. We will do that. As I'm saying, it is not at one location, at several locations, and it doesn't mean that it is only 3-second machines. There are machines of 7 seconds also. And you all know there will be a first level check, which always they say their checks and balance, where the technical engineers from VEL come and verify the machines, whether there is any tampering on the machine, any change of the chips are there, change of code is there. And all these 3-second machines pass the first level check. What does it mean? Who are those engineers who pass these machines? If they passed, the 3 seconds should be the protocol accepted by Election Commission of India. If so, they have to put it in their website, which is not there. So you can again see it.
By the way, it is there even in my Twitter account, Twitter handle at VHK Prasad. You can download this video from there. Thank you. Now, only issue is here, I wanted to request all national media and also regional media. You are all aware, I promoted technology in this country from government side. I was co-chairperson for deregulation of telecommunication sector also to promote IT. In my government earlier and now, we are in advanced stage of computerization of everything. There is Aadhaar, we have gone to Boothar also. More or less, it is automated governance. But at the same time, on technology, I am very clear, we should not become slaves to technology. We should become masters to technology. Where to use technology, where not to use technology is very important. One-time investment you are putting, that is once in 5 years. You are using all outdated machines. Ultimately, it is going to create problem. Second one, you are establishing, you have incurred expenditure of 9,000 crores for EVPAT for transparency. That is the judgment they are given on October 8, 2013 by Supreme Court. On Supreme Court orders only, you have established VVPAT. Now 2019 you have completed. It is not a showcase. Only one booth will count, not others, because of manual or because of more people, all these things. Now they have increased 5. What our demand is 50. 50% of booths has to be counted. On the basis of that, results has to be announced. This is the responsibility of the Election Commission. We are very clear on that. Yesterday we showed all these things. Then EC, Election Commission, Chief Election Commissioner asked us to send our technical person. By evening, they are saying, there is a case against you, that's why you did not come. We do not discuss with you. After booking case against him, he was called for discussions. This is a fight for transparency. He is a whistleblower, not committed theft. You have to understand the difference between the two. Earlier election commissions called him for discussion, and finally they arrived with VVPAT. Now election commission has to answer all these things. If I say something, then immediately I am anti-democrat. What democracy? We need transparency. We want to maintain trust of the voter. What they are saying today, they are blaming me, I am losing election, that's why I am propagating. No, I am committed for my country. I know technology. And at the same time, I am fighting for democracy for so many days. They harass us like anything. They are harassing all of us. We are mentally prepared to save democracy, to save democratic institutions. We are doing. Election Commission has to act independently. It is an autonomous body. It is not branch office of BJP no longer. We are very clear. If you behave like this, we will fight. So this is where we are demanding again. Election Commission has to accept 50% of counting. Then there is no case at all. Then we will move forward. Or otherwise, we will take to the Supreme Court and we will fight. Ultimately, we want to educate the nation. The problems involved in this, how they are manipulating, what is the scope, everything. We will have regional meetings, we will go to the people, we will educate through election process also we have done. In the initial stage in Andhra Pradesh, first hour, thousands of machines have failed. Up to 1 o'clock, they completed replacement of EVMs. Again, they created law and order problem. Everywhere there are attacks. Because the Election Commission has changed all my police officers, they demoralized the police force. They are done. But ultimately, people revolted. People responded. They came to the rescue of democracy. This is the victory of Andhra Pradesh. This is a successful story of Andhra Pradesh. So, nation will respond. There is no problem at all. I am confident. People are having wisdom. They will complete everything.
You want to say anything? So now it is up to national media to respond or regional media to respond now. What we are asking, 50% VVPAT counting. Is it unjustifiable in this country to get transferred? Why BJP is going back? Why election commission is not acting? That they have to answer. CPM representative. Mr. Nilotpal Basu will address from CPM side. I won't take much time because already everybody else has spoken. We all know the issues. The main question is that there is a public perception that this entire process is